Assalamu alaikum everyone, hope you're all doing good. So as we all know that we are taking unit 3 Robinson Crusoe, and yesterday we took part B and part C and did some adverbs related to comparative and superlative degree. So today our lesson is basically about the question answers related to Robinson Crusoe. I hope you have read the story very carefully so we can answer the given questions at the end. So exercise A, comprehension, question number 1. Answer the following questions. Part A. Who was Daniel Defoe? Daniel Defoe कौन था? Basically Daniel Defoe जो है जिसने जो स्टोरी है वो लिखी है, he was the author of the story. उसके बारे में हम बताएंगे कि who was Daniel Defoe. So the answer is here. Daniel Defoe was a famous writer, merchant, journalist and spy, as well as a novelist and poet. ठीक है, Daniel Defoe, he was a writer, merchant, journalist, spy और वो novelist और poet भी था जिसने बहुत सी stories और बहुत सी जो है poetry भी लिखी थी. So this is basically one of the introduction of a short introduction of the author. Okay, let's see question number 2 now. What happened about 2 weeks after Robinson Crusoe started his voyage? क्या हुआ था रॉबिन्सन क्रूसो ने जब अपना जर्नी स्टार्ट किया था एग्जैक्टली उसके टू वीक्स बाद 2 हफ्ते बाद क्या हुआ था रॉबिन्सन क्रूसो के साथ? दिस इज़ द क्वेश्चन. लेट्स सी व्हाट इज़ द आंसर. He clambered into a boat with 3 others and rowed towards the shore. A gigantic wave sank the boat and he was the only one who managed to swim ashore. क्या हुआ था कि रॉबिन्सन क्रूसो जो था वो उसने अपनी बोट पर अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और उसके साथ 3 और लोग थे और उसने जो है शोर की तरफ ओशन की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था. लेकिन एग्जैक्ट 2 वीक्स बाद एक जाइगेंटिक वेव, बहुत बड़ी वेव आई जिसकी वजह से उसकी कश्ती जो थी जिसमें शिप में वो सवार था वो डूब गई थी. एंड ही वॉज द ओनली वन, और सिर्फ वही था जो आइलैंड तक पहुंच सका था. ठीक है, सो दिस इज़ द बेसिकली द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट. लेट्स सी व्हाट इज़ द थर्ड पार्ट. What did Robinson Crusoe take from the ship? In your opinion, which items would have proved most useful? द क्वेश्चन इज़ के रॉबिन्सन क्रूसो ने अपनी शिप से क्या दिया, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो ली थी और आपके ख़्याल में वो चीज़ें उसके लिए यूज़फुल थी या नहीं थी? दिस इज़ द क्वेश्चन. लेट्स सी व्हाट इज़ द आंसर. Robinson Crusoe swam back to the ship to get some things. He took bread, rice, cheese, tools, wood, rope, nails, sails, and clothes, guns and ammunition, and sugar and flour. So all of these were the things that he took from the ship, and these things were actually useful for him. ठीक है, इनमें से आप तकरीबन 5 to 6 भी लिख सकते हैं. It depends on you, and there were some others also. So all of the things that he took were quite useful for him. ठीक है, let's go back to the questions and let's see what is the next question. How did Robinson Crusoe discovered दैट ही लिव्ड ऑन एन आइलैंड? जब रॉबिन्सन क्रूसो को जब आइलैंड तक पहुंच चुका था, तब पहुंच गया, तो उसको कैसे पता चला कि ही वॉज बेसिकली ऑन एन आइलैंड, कि वो एक आइलैंड पर आकर रुका है? लेट्स सी व्हाट इज़ द आंसर. Robinson Crusoe discovered that he was on an island when he walked up a little hill and looked around. From there he could see that he was on an island. रॉबिन्सन क्रूसो ने किस तरह ये पता लगाया कि उसने जब उस आइलैंड पे पहुंचा तो वो एक छोटी सी हिल पर, एक छोटा सा पहाड़ था जिस पर चढ़कर उसने इर्द गिर्द देखना शुरू किया. और जब व्हेन ही लुक्ड अराउंड ही फाइनली केम टू नो दैट ही वाज बेसिकली ऑन एन आइलैंड. तब उसको पता चला कि वो एक आइलैंड पर खड़ा है. ठीक है, दिस इज़ इट्स आंसर. What are some of the tasks Robinson Crusoe did on the island? Robinson Crusoe ने क्या क्या tasks जो थे, actions जो थे वो परफॉर्म किए आइलैंड पर? Some tasks that Robinson Crusoe did on the island were building a house. उसने एक घर बनाया वहाँ पर. Exploring, बहुत सी चीज़ें एक्सप्लोर करने की कोशिश की. Making a boat, एक बोट बनाई. Learning to make boats, और उसने जो है वो छोटे छोटे गड्ढे जो हैं वो बनाने की कोशिश की. Growing crops, rice and wheat, and making bread. So all of the things that these are all the things that he used to do
while he was on an island. ठीक है? What are some of the things he found on the island? कौन कौन सी चीज़ें उसको island पर मिली थी जब when he was actually spending his time on an island? Let's see. Some of the things that he found on the island were wild grapes and limes, wild animals and goats, water and clay. Okay, there were some other useful things also. You can also read the story and find out by yourselves. Some of the examples are given over here.